Hello students. So today we are going to read a poem, Macavity the Mystery Cat, which is written by T.S Eliot. T.S Eliot is considered one of the greatest writers of the English literature. If going further you will study the English literature, you will learn about many more poems of T.S Eliot. His works are compared very different from the other writers of his times because he mostly writes in the mysterious ways. So today we are going to learn about the mystery cat whose name is Macavity. So most of you must have seen cat, right? And some of you might have a pet cat as well. So have you ever noticed anything mysterious about it? I guess you must have noticed it, because generally the cats are associated with mysteries and the dark myths that are associated with them. Generally what we see, that the cats are always very silent and they come and go and do their work very silently without getting noticed by the other people. So it is saying, do you have a pet cat? If yes, you can answer yes. Have you ever noticed anything mysterious about it? So it is not necessary that you answer this according to a pet cat. You can answer it in a general way as well. कि अगर आपने कहीं पे कोई कैट देखी है और आपको उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस लगा, मतलब कुछ रहस्यमय लगा, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं. It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery? Read the poem and find out. बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई कैट हो वो मिस्ट्री ही हो, बट जो मैकेविटी है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो सच में एक मिस्ट्री है. और बोलेंगे ऐसा, मतलब बोल रहा है जो पोएट है वो बोल रहा है कि ऐसा क्या है मैकेविटी में जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री बनाता है. आप पोएम पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे, मतलब आप पोएम पढ़िए और खुद पता करिए कि मैकेविटी में ऐसा क्या है कि उसे हम मिस्ट्री कैट बोल रहे हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. द फर्स्ट स्टैंजा इज हियर. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. जो बोल रहा है जो मैकेविटी है एक मिस्ट्री कैट है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द हिडन पॉ. हिडन पॉ मतलब कि ऐसा पॉ, आपको पता है जो पंजा होता है उसको कहते हैं, जो कैट का जो पंजा होता है उसको पॉ कहते हैं, तो उसको हिडन पॉ कहते हैं. हिडन पॉ उसको क्यों कहते होंगे, क्योंकि जनरली वो दिखता नहीं है किसी को. जो मैकेविटी जो है वो किसी को दिखता नहीं है. Macavity is a mystery cat. He is called a hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. तो Macavity क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है जो लॉ को धोखा दे सकता है या लॉ को चकमा दे सकता है. Who can defy the law. लॉ मतलब जितने भी कानून वगैरह हैं उसको वो धोखा दे सकता है Macavity. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. तो ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है और जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये इंग्लैंड की दो पुलिस फोर्सेस का नाम है, मतलब इंग्लैंड के अंदर जो पुलिस फोर्सेस है उनका नाम है. तो ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो मैकेविटी से काफ़ी परेशान है और जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो उससे बहुत दुखी है. तो जो स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड दोनों मैकेविटी से काफ़ी दुखी है और परेशान है, क्योंकि जब वो सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So I hope the first stanza might be clear to you. There, it is just an introduction for the Macavity that he is also called the hidden paw, and he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, which means the Scotland Yard and the Flying Despair are very troubled by the Macavity, because when they reach the scene of crime, Macavity is always not there. He has run away somewhere else. So now we'll look at the questions based on the first stanza. So the first question is, who is Macavity? As you must have read, Macavity is a mystery cat. What is the popular name of Macavity? We have read in the first line, Macavity is also called the hidden paw. So hidden paw is the popular name of Macavity. Now why is Macavity considered a master criminal? As we have read in the second line, he is the master criminal who can defy the law. So Macavity is called the master criminal because he can defy the law. So now we'll move on to the second stanza. I hope the first stanza is clear to everyone. So second stanza is, Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. He's broken every human law.
he breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. So the second stanza, they are just continuing with the characteristics of the Macavity. मतलब वो जो Macavity की characteristics हैं, जो उसकी personality है, उसी के बारे में और चीज़ें बता रहे हैं हमें. तो बोल रहे हैं Macavity, there is no one like Macavity. मतलब Macavity जैसा कोई भी नहीं है. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. तो बोल रहे हैं जो Macavity है वो हर एक ह्यूमन लॉ को ब्रेक कर देता है. मतलब जो इंसानों द्वारा जितने भी लॉ बनाए गए हैं उस सबको Macavity ब्रेक कर देता है, और उसके अलावा वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर देता है. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब कि एक ऐसा फोर्स है हमारे अर्थ में, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम सबको ज़मीन पर टिकाए रखता है. अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हम सब हवा में फ्लोट कर रहे होते. तो आपने जनरली सुना होगा ग्रेविटी के बारे में. बोल रहा है कि वो Macavity जो है वो ह्यूमन लॉ को तो ब्रेक करता ही है, लेकिन साथ साथ में जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो उसको भी ब्रेक करता है. His powers of levitation would make a fakir stare. Levitation मतलब कि हवा में फ्लोट करना. तो आपने देखा होगा जब कैट्स जो है वो जनरली जब वो जंप करती है तो एक तरीके से हवा में फ्लोट करते हुए आराम से ज़मीन पर लैंड करती है. तो उसी पावर्स के बारे में हमें पोएट बता रहा है कि उसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है, मतलब कि जो हवा में उसकी फ्लोट करने की या हवा में उसकी उड़ने की जो क्षमता है, वो एक फ़कीर को भी स्टेयर करने पे, मतलब घूरने पे मजबूर कर सकती है. फ़कीर मतलब कौन? जो थोड़े होली मैन होते हैं, मतलब जो सन्यासी होते हैं, जो जिनको मैजिक वगैरह आता है, मतलब वो सब भी उस तरीके से नहीं फ्लोट कर सकते जिस तरीके से Macavity फ्लोट करता है एयर में. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, Macavity इज नॉट देयर. और जब सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो Macavity वहाँ पर नहीं होता. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा कि उसने हर एक ह्यूमन लॉ को ब्रेक किया हुआ है, और जो नेचुरल लॉ है मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको भी ब्रेक किया हुआ है. उसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है, मतलब हवा में फ्लोट करने की जो उसकी पावर है, वो किसी फकीर को भी घूरने पे मजबूर कर सकती है. नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंजा. Sorry, there are two more lines in the stanza. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once again, Macavity is not there. तो बोल रहा है आप Macavity को बेसमेंट पे भी ढूंढ सकते हैं, मतलब कि नीचे जो बेसमेंट आपको पता होगा, जिसको ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसको बेसमेंट कहते हैं. तो आप उसको बेसमेंट में भी देख सकते हैं, उसको आप हवा में भी देख सकते हैं, एयर में भी देख सकते हैं. लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मतलब बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, Macavity इज नॉट देयर. मतलब Macavity वहाँ पर नहीं है, आपको वहाँ नहीं मिलेगा. ठीक है. So now we look at the question based on the stanza. Is there anyone like Macavity? No, there is no one like Macavity. As we have read in the first stanza itself, that Macavity, there is no one like Macavity. So the answer would be there is no one like Macavity. So what laws have been broken by the Macavity? So what laws have been broken? Every human law has been broken by the Macavity, as well as the law of gravity has been broken by the Macavity. So what happens when we reach the scene of crime? When we reach the scene of crime, Macavity is not there. Find the word from the stanza which means saint. So फकीर is the word from the stanza which means saint. मतलब कि साधु संत जो होते हैं उनको हम फकीर भी कहते हैं और सेंट भी कहते हैं इंग्लिश में. I hope the second stanza would be clear to you. I know this poem is a bit of confusing for you, but if you listen properly, you will be able to understand the poem and appreciate the beauty of it. So now we'll move to the third stanza. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he's half asleep, he's always wide awake. बोल रहा है Macavity is a ginger cat. He's very tall and thin. So why Macavity is a ginger cat? Because he wants to say Macavity is very spicy, which means वो काफी तेज है. Generally, when we say someone is spicy, we are expressing the thought that they are very proactive and they like to do things in a hurry and they are always top of the town. So that's why it is said Macavity is a ginger cat. मतलब कि Macavity जो है वो काफ़ी स्पाइसी है, वो हमेशा एक्टिव रहता है
इसलिए उसको जिंजर कैट कहा है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, मतलब मैकेविटी जो है वो काफी टॉल है और थिन है, मतलब काफी लंबा है और काफी पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर sunken in। बोल रहा है अगर आप मैकेविटी को देखेंगे तब आप उसको मतलब जान पाएंगे। उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई हैं, मतलब इट इज sunken in, जो उसकी आंखें हैं वो धसी हुई हैं, मतलब अंदर की तरफ है। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed। मतलब कि जो उसकी आईब्रोज है वो ऐसे लगती हैं कि वो हर टाइम पे कुछ सोच रहा है। डीपली लाइंड विद थॉट मतलब कि हर टाइम पे कुछ सोच रहा है। उसके आईब्रोज है मैकेविटी की वो ऐसी लगती हैं। His head is highly domed। हाईली डोम्ड मतलब कि वो गोल है, जो उसका सर है वो गोल है। उसकी आईब्रोज जो है वो डीपली लाइंड है, लगता है कि वो सोच रहा है। उसकी आंखें जो है वो sunken in है, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई हैं। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। मतलब कि उसका जो कोट है उस पर धूल जमी हुई है जिसको वो कभी साफ नहीं करता। जो उसकी whiskers है, whiskers आपको पता होगा जो बिल्लियों के जो मुंह के ऊपर जो 4 बाल होते हैं उसको whiskers बोलते हैं। So his whiskers are uncombed मतलब कि जो उसकी whiskers है वो uncombed है, उसे सेट नहीं है ढंग से। He sways his head from side to side with movements like a snake। और वो अपना सर जो है वो साइड टू साइड मतलब एक साइड से दूसरी साइड हिलाता रहता है मैकेविटी, जैसे कि सांप हिलता है। And when you think he's half asleep, he's wide awake। तो क्या होता है कि जब आपको लगता है कि मैकेविटी सो रहा है लेकिन वो उस टाइम पे भी सो नहीं रहा होता, वो उस टाइम पे भी जगा होता है। मतलब कि when you think he is half asleep, he is always wide awake, which means he is always active and he always knows what is going around him। मतलब he is never asleep, मतलब he is never fully asleep because he is the master criminal, so he always has to be proactive। He always has to keep himself away from the police, right? So that's why when you think he is half asleep, he is always wide awake। So now we'll move on to the question answers from this stanza. What is the color and shape of Macavity? So Macavity is a ginger cat, which means Macavity is brownish in color, right? And what is the shape of Macavity? Macavity is very tall and thin. So the color of Macavity is like ginger and its shape is tall and thin. How are Macavity's eyes? We have read Macavity's eyes are sunken in. How are the whiskers of Macavity? The whiskers of Macavity are uncombed. Find the word from the stanza which means disregard. So neglect. Disregard and neglect means to not give attention to something, right? Now we'll read the fourth stanza. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is a find and felon shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street. You may meet him in a by street. You may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. So then again it is saying there is no one like Macavity, मतलब Macavity जैसा कोई भी नहीं है। For he is a find and felon shape, मतलब कि find मतलब कि devil, वो एक कैट के शेप में, felon shape मतलब कि कैट के शेप में, वो एक मॉन्स्टर है। मैकेविटी जो है वो एक कैट के शेप में एक डेविल है, मतलब एक बहुत बुरे किस्म की बिल्ली है कैट के शेप में। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मतलब कि मॉरल करप्शन, जो जिसकी कोई भी वैल्यूज नहीं है, जो सिर्फ बुरे काम ही करता हो। तो मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है जो कि एक कैट के शेप में एक डेविल है, मतलब कि एक कैट के शेप में एक you must know what is devil, right? He is a monster of depravity. Depravity means who is morally correct, who doesn't have any values. तो जो मैकेविटी है वो कैट के शेप में एक डेविल है, उसके पास कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there। बोल रहे हैं आप उसको अपनी आसपास की सड़कों में मैकेविटी को देख सकते हैं, या आप चौराहे पे उसको देख सकते हैं, स्क्वायर में तो चौराहे पे उसको देख सकते हैं, लेकिन जब क्राइम होगा तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होगा। मतलब इन जनरल तो आपको मैकेविटी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लेकिन जब क्राइम होगा तो मैकेविटी आपको नहीं दिखेगा। So we'll look at the questions. Is there someone like Macavity? No, there is no one like Macavity. Who is a find in the guise of a cat? मतलब who is devil in the guise of a cat? So Macavity is a find in the guise of a cat। मतलब वो है तो कैट के शेप में, लेकिन अंदर से वो डेविल है। Where can we see Macavity? We can see him in by street, or we can see him in the square. As you can go through these lines again. You may meet him in a by street. You may see him in the square.
which means you can see Macavity in a by street, which means you're nearby street or in the square. But when a crime is discovered, then Macavity is not there. So that's it for the poem. I hope the poem must have been clear to you. It is about the Macavity and his mysterious nature. So, in all these four stanzas, the characteristics or the personality of the Macavity has been defined. It has been told that Macavity is a master criminal who has defied every human law, and also the natural laws has been defined by him. He is the bafflement of Scotland Yard, and he is the bafflement of Scotland Yard, which means the police are very troubled by him, because when a crime is done, Macavity is always not there. He's a and then what he looks like has been defined in the third stanza, that he is ginger colored and he is very spicy, which means he's very active. He's very tall and thin. His whiskers are uncombed, and his jacket is dusty. So all these characteristics has been defined by the Macavity. So I hope you must be able to imagine how Macavity would look in real if he existed. So that's why the poet wanted to say, the poet wanted you to have a picture of the Macavity in your mind, so that you could imagine how exactly the Macavity looked like. So I hope the poem is clear to everyone. If anyone has any doubt, you can reach out to me directly. I'll be there to help you. And in the next class, we will discuss the workbook based on the poem. So I would recommend you to go through the poem again by yourself. And if you have any doubt, you can come to me directly. I'll be more than happy to help you. Thank you, students.